I'm sorry. Can I take the ratio of 2 and 1 students? तो अगर मैं 2 and 1 लेता हूँ तो आंसर देखो students, n sin theta minus mu s n cos theta divided by mu s n sin theta plus n cos theta is equal to mv square by r upon mg. Now can you get an answer students? Yes, I got. So can I say यहाँ पे तुम्हारा m cancel हो जाएगा students. अब यहाँ पे देखो can I divide students listen carefully. ये तुम्हारा न्यूमरेटर है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है. Can I divide numerator by n cos theta and denominator also by n cos theta students? Divide numerator and denominator by n cos theta. तो ये क्या आंसर होगा? Please pay attention students. ये n और n cancel होगा. What is sin upon cos? Tan. Tan. This is minus sin. Mu s. Can I say n cos theta upon n cos theta will be 1. Am I getting this relation? Tan theta minus mu s. Students, tan theta minus mu s. See the denominator now. Divide this by n cos theta. And n will get cancelled. What is sin theta upon cos theta? Tan theta. What is sin theta upon cos theta? Tan theta we consider. Is that clear? So I can consider in this case will be tan theta mu s, tan theta mu s, and the sign will be plus. N cos theta will get cancelled. Since are you getting it? That means when you are trying to solve it, तुम्हारा numerator क्या बन जाएगा? Negative. Denominator क्या बन जाएगा? Positive. Formula will remain exactly the same. Is this clear to all of you all? I repeat, your numerator will have a negative sign and your denominator will have a positive sign. This negative sign shows that that is the formula for V minimum. And अगर मैं friction को निकाल देता हूँ, students, if I eliminate friction, take mu zero. Take mu zero. What is my answer? Rg tan theta. So students, we have got the formula for velocity of a car on a banked road not considering friction, Rg tan theta. Considering friction, two formulas. V maximum, numerator positive sign, denominator negative sign. V minimum, numerator negative, denominator positive. The formula will remain as it is. ये जो Rg है ना, this R and G will go over here. And this is V square. Students, is this part clear to all of you? Yes, sir. Can I erase it? It seems that only one person is responding. What about the rest of them? Bhumi, Akash, Aman, are you all there or are you all sleeping? Dev, Devesh, Jeet, Jason. So in case if you don't reply, I will not come to know what exactly y'all are you getting it or not. Because after this, I'll be doing a few derivation and तुरंत में problems पे जाने वाला हूँ. And then if you're not getting problems, you are the one who are going to suffer it. So please to take care. There are lots of formulas in this particular topic. You need to remember all these particular mathematical relations properly. Okay, can I erase this? मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. Okay. The two things ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, Vmax के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ जाता है, V मिनिमम के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ जाता है. दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों समेशन होके इस तरफ mv स्क्वायर होगा और इनमें ये डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर. टू कीप दिस इन माइंड. Okay, students. Did I give you the formula for maximum speed of a motorcyclist? Students? Students, did I give you the formula for maximum speed of a motorcyclist on a circular unbanked road?
Ayana? No, no. Okay, the answer is no, students. I don't know about it whether you have, suppose if you see certain bike races, have you seen certain bike races? जहाँ पे, if you see a particular bike race, students, the person who's riding the bike, okay, if I try to draw it in a way, think as if this is the front wheel of the bike, okay, और इसको मैं simple handle ले रहा हूँ, students, और ये road surface है. I'll try to put in this manner. इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें. You can consider a motorbike, motorcycle, or simple when you do cycling also, students. ये शायद तुम लोग ने experience किया होगा. Those who are cycling regularly, students. Think as if कि ये cycle का front wheel है, students. Imagine this is the front wheel, okay? And this is the handle of the cycle, or the rod we consider. और यहाँ पे तुम्हारा axle है, okay? ये ground है. This is the ground where the tire is coming in contact, and this is what the handle is. Okay, the cycle का handle यहाँ पे है, students. Now, the rear portion, you're sitting onto it and the cycle is going straight. So the cycle is going straight in this case. You're going with a certain speed. Lekin now suppose if I see that your cycle is made to move along an arc, okay, along a circular arc. And by chance, agar tumne cycle ko tilt kiya, students, if I try to go for this cycle और उसको मैंने tilt कर दिया, don't you think so that कि जब इसका speed बढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा तुम cycle को tilt कर देते हो? हाँ, students? Now the handle is in this manner. Or have you seen the motorbike race? The person who's riding it, don't you think so that the person actually undergoes a certain tilt, is tilting onto one side to gain speed? Students, क्या ये clear हो रहा है? Is the diagram getting clear to all of you? Yes, sir. Yes. If you happen to see those bike races, students, bike race or forget about bike race, day to day life में तुम cycling करते हो, students, तो जब भी तुम्हें high speed में जाना है तो थोड़ा सा turn के time पे थोड़ा सा तुम tilt होते हो. You're trying to tilt. और उस टाइम पे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी. उस टाइम पे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी. So now I want to know, students, I want to know velocity of a motorcyclist on a circular unbanked road, eliminating friction. I'm not considering friction. Can anybody give me the mathematical formula for this? Velocity of a motorcyclist on a circular unbanked road. यानी हो क्या रहा है? सिर्फ ये cyclist क्या हो रहा है? He is getting tilted. अगर तुम देखोगे, what exactly tilt you are trying to take it? So if you say that, sir, ये vertical था, ये जो motorcyclist था, ये vertical था, agreed. But now the motorcyclist has undergone a tilt. So now if I happen to go for the tilt, what exactly a tilt? The tilt is taking place at an angle theta. So the person has deflected at an angle theta with a vertical. Friends, I want to know the velocity of the motorcyclist on a circular unbanked road eliminating friction. Anyone? Velocity of a motorcyclist on a circular unbanked road.
Yes. Anybody? Bhumi, what about you? Ashmita, Mayank, Nishant. Nishant, can you answer? So give me 1 minute. Okay. Purvi, Riya, Swapnil, Vansh, Smith. See one thing, students, when you're solving multiple choice questions now, you will get such kind of it. Now, I would like to make it very clear. Ashmita, हम लोग ने एक question किया था ना last lecture में शायद I made it possible. I explained you twice. You said it, sir. It was done earlier also. Are you listening, Ashmita? Yes, sir. I Yeah. asked you the I asked you about a rotating drum, a cylindrical rotating drum, minimum angular velocity. Yes. है ना? Yes, Now sir. see, I did that particular question, and maybe earlier also I must have done. बाद में थोड़ा सा quick also इसके ऊपर हुआ, लेकिन you won't believe किसी को ये Sunday major test था, and students they asked that particular as an MCQ. Hello students, it was asked as a multiple choice question. That formula was asked. So you need to know these kind of things. So how do you think? कैसे तुम सोचोगे? और ये तुम देखोगे स्टूडेंट्स बाइक रेसेस के अंदर होता है. अगर तुम ध्यान से देखोगे, those good races we consider, okay, the number of laps has to be covered, okay, 12 laps, 13 laps, 14 laps को cover करने के लिए, okay, तो वहाँ पे बाइक रेसेस जब भी होता है तो have you seen the biker goes with a certain speed, और जब भी turnings पे होगा तो he bends himself to a certain extent. Suppose अगर ये turn अगर देखोगे तो ये turn clockwise में जा रहा है students, so the bike racer will turn himself or bend himself so much to the ground, students, such that uska knee pad, I don't hope you know what exactly knee pads are. Yes, Uska sir. jo knee hoga na will be hardly few centimeter away from the ground. इतना नजदीक होता है उसका knee pad. You might feel कि यार अगर थोड़ा सा भी uneven surface होगा तो hit करके गिर जाएगा बेचारा. But and that is what to gain speed. To gain speed, they have to bend themselves. और जितना थीटा बढ़ता है स्टूडेंट्स, ये देखा गया कि जितना तुम थीटा को बढ़ाते हो उतना उनका स्पीड बढ़ता है. इट्स लाइक दैट. तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड? फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड ओवर हियर. Yes, Riya, you want to answer, Riya? Okay, can I answer for your students? Yes, sir. Now please listen carefully, students. कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स और आंसर सुनना स्टूडेंट्स. I did questions on to velocity of a car on a banked road. I did velocity of a car on a circular unbanked road. I did consider friction. तो थोड़ा सा वो हिसाब से सोचो ना कि यहाँ पे भी फोर्सेस होंगे, और सिंपल है कि सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. मुझे यहाँ पे फोर्सेस के बारे में देखना है. तो अगर सपोज ये साइक्लिस्ट पूरा बेंड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कैन आई सी द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन आई कंसीडर सपोर्टेड एट द एक्सल? तो या तो मैं ये पॉइंट लूँ या तो ये पॉइंट लूँ, एनीथिंग आई कैन कंसीडर. अगर सपोज ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लेता हूँ, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लेता हूँ, इट कैन बी कंसीडर बिकॉज यू आर सिटिंग बिहाइंड, तो आई कैन कंसीडर दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखता हूँ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, हाउ डू आई शिफ्ट माय वेक्टर्स? ये जो वर्टिकल है आई कैन शिफ्ट इन दिस वे, एग्रीड. ये जा रहा है वर्टिकल, एग्रीड. ये जा रहा है इंक्लाइन. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी अगर ये थीटा है तो कह रहे से ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज टू आर पैरेलल लाइंस. ये तुम्हारा इंक्लाइन फोर्स कौन सा होगा? सर द बाइक इज इंक्लाइंड बिकॉज इट्स गोइंग विद अ हाई स्पीड. इज इट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड? यस, द टायर्स आर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड स्टूडेंट्स. So what exactly I'll consider this as my normal reaction force?
क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? I shifted simply this vector parallel to itself. ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हुआ. Are you Yes, getting sir. it? और ये तुम्हारा क्या होगा? Since the bike is tilted, so what exactly consider this is my normal reaction force in contact with the surface. और ये एंगल थीटा है. अभी क्या हुआ? अरे सर अभी तो इजी हो गया, आपको n मिल गया. और वही आप यहाँ पे भी ले सकते थे. ये अगर मैंने ऐसे ले लिया और ये मैंने ऊपर ले लिया, आई एम टेकिंग इट, आई कैन सॉल्व इट. यहाँ पे भी आई कैन कंसिडर दिस इज एंगल थीटा, आई कैन टेक इट. ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये ऊपर की तरफ ये थीटा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है ना. तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? n cos थीटा. या तो तुम कॉन्टैक्ट के हिसाब से लोगे तो ये n cos थीटा हो जाएगा. ये कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल. सर ये होगा n sin थीटा. वो तुम यहाँ पे अगर दिखाओगे तो वो भी n sin थीटा होगा. यानी या तो तुम ये पकड़ो या तो ये पकड़ो, कोई भी केस में तुम्हारा आंसर वही आ रहा है. Are these forces clear for a motorcyclist is bending with the vertical in order to gain speed? क्या ये फोर्सेस अभी क्लियर हुए स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? रिप्लाई फास्ट. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, जैसे तुम्हें ये मिल गया तो अभी क्या करोगे? सर अभी तो इजी हो गया हमारा. ये क्या है सर? ये जो n cos थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है सर? वेट ऑफ द एंटायर, weight of the entire car we consider. mg is always directed vertical downwards. और n sin थीटा क्या बन जाएगा सर? n sin थीटा मेरा बन जाएगा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल. आपने बोला था वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइक्लिस्ट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूला, लेकिन मैं यहाँ पे mv²r लूंगा. और ये n cos थीटा क्या है सर? n cos थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को. सर ऐसे करते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं, n कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू mb कैंसिल हो जाएगा, वो v²r जी. अरे सर मिल गया मेरा आंसर. That's the formula. So students, what's the velocity of a motorcyclist on a circular unbanked road eliminating friction? Rg tan theta. What is the difference? What is the difference between this formula and the formula we learned it for a car on a circular banked road? Not considering friction. यहाँ पे भी तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? Rg tan theta, है ना? ये भी देखो Rg tan theta. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे रोड को बैंक किया हुआ था. स्टूडेंट्स ध्यान से सुना, यहाँ पे रोड को बैंक किया था एट एन एंगल थीटा. किससे? हॉरिजॉन्टल से. और यहाँ पे इंसान अपने आप को बैंक कर रहा है. The motorcyclist who's riding on the motorbike, he himself is bending and he's moving away from the vertical at an angle theta. So the difference over here is simply with respect to theta. Over here, theta is angle with vertical. Students, do take care when you're solving multiple choice questions. यहाँ पे theta is angle with the vertical. Students, ये ध्यान में रखना. और यहाँ पे theta is angle with horizontal. दोनों केस में सर्कुलर मोशन हो रहा है. दोनों केस में तुम्हें फोर्स सेंटीमीटर चाहिए. ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, gravitational acceleration. Gravitational acceleration, velocity of a car on a banked road, and the road is banked at a theta with the horizontal. Over here, the entire motorcyclist is banking himself with vertical at an angle theta. और जितना वो बेंड करते रहेगा, जितना वो झुकेगा, उतना उसका स्पीड बढ़ेगा. क्योंकि if theta is considered, tan theta की वैल्यू बढ़ेगी तो what happens? We also will increase. Is this part clear to all of you? Students, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. So please, while putting down the formula, write down correctly. ये formula अगर तुम लिखते हो तो please say that theta is measured with the vertical, because at times they give you a question जहाँ पे बोलेंगे a motorcyclist is cycling on a circular road. ध्यान से सुना, circular unbanked road at an angle of 37 degrees with the horizontal. यानी तुम्हें दिया है ये,
So in the formula, will you take 37 degrees or will you take 53 degrees? 53. Are you getting it? That is why read your question very carefully. Can I erase the students? Just a second, sir. Yes, sir, you can erase it. Now, two more things, students. Okay. I have two more things to understand. One is with respect to a few more things, students. Two more things. Now we speak about students' time period of oscillation of a conical pendulum. Ashmita, did we do this? Asmisha? No, sir. Okay. Time period of oscillation of a conical pendulum. Students, अगर तुम पूरे physics में देखोगे ना students, have you ever come across with any of the formulas on time period, students? जब से तुमने physics IIT Hub से शुरू किया है, from day one lecture till now, under whomever you have studied, whether it's board lectures, whether it's other lectures, anywhere have you come across formula for time period? कहाँ पे भी? Yes, sir. Where? Simple pendulum. But it was like TA is equal to 1 upon r. Absolutely correct. So for simple pendulum, okay, the bob is oscillating. Is it performing angular oscillations or is it performing linear oscillations? Simple pendulum. कोई बता सकता है? Simple pendulum के अंदर ये जो bob है, क्या वो angular oscillation perform कर रहा है या linear oscillation? Angular. No, my dear. Simple pendulum में the bob is performing linear oscillations. Everybody listen carefully, students. ये हमेशा ध्यान में रखना. ये जो bob है ना students, ये bob oscillate करता है और वो linear ही कर रहा है along a straight path. क्योंकि ध्यान से सुनना students. Why am I saying linear? Why not angular? क्योंकि ये जो tilt हुआ है ना, bob का जो tilt हुआ है at an angle theta, जिसको हम बोलते हैं semi vertical angle. Students, this theta is very small. It is less than 10 degrees, nearly equal to 6 degrees. Students, have you ever measured 6 degrees? Look at your protractor, students. 6 degrees, is it a very, very large angle or a very small angle? Students? एक 6 degrees measure करके रखो. मीन से राइट हैंड साइड 6 degrees measure करो, मीन से लेफ्ट हैंड साइड 6 degrees करो, और फिर you try to draw a straight line. Will that straight line will be looking like an arc or will it be a straight path? Will it be a length of arc or will it be a segment? It will be a segment. It's the shortest one. यानी ये linear oscillation है. यानी स्टूडेंट्स कभी भी किसी ने पूछा a simple pendulum does it performs linear oscillation या angular, तुम्हारा आंसर होना चाहिए linear. अगर किसी ने पूछा क्यों भाई, तो तुम्हें ये बोलना है कि थीटा बहुत छोटा है. यानी displacement of the bob from the mean position is very small. How much? Less than 10 degrees. The formula for time period of oscillation of a simple pendulum means T is equal to 2 pi under root. Yeah. So the theta is actually dependent on how much you pull back the bob, right? So theta can be actually also 50 degree. It doesn't have to be 10. Theta can also be? Theta can also be like 50 degree, 30 degrees also, right? Because you're pulling back the bob, right? To release it. Yeah. So that time it will become an angular, right?
No. But that won't give me time period as 1 second. What is a simple pendulum? Okay, Nishant, you are speaking, isn't it? Yes, sir. Can you tell me what is the time taken by a simple pendulum to complete one oscillation? Nishant, what is the time taken by a simple pendulum for one oscillation? So what is your answer? It will be 1 second. How Yes, much? sir. ये 1 ध्यान में second. रखना. In order to get 1 second, students, the theta is very small. उसका मतलब अगर ये mean से शुरू होता है, one oscillation का मतलब क्या? Starting from mean, going to positive extreme, coming back to mean, then going to negative extreme, coming back to mean. This is called as one oscillation, and that is 1 second. In order to have this 1 second, students, the displacement should be very small. If I exceed beyond a suitable angle, it won't give me one oscillation equal to 1 second. Are you getting it? क्या ये clear हुआ, निशांत? Can you repeat one more time? I didn't understand. For one full oscillation, if I want for one full oscillation, utna matlab, suppose if I have a stopwatch, okay, a stopwatch which gives you time in very small intervals, we consider, okay, smaller units. So mera bob center mein hai, I start the stopwatch, and suppose if I try to move far away, you said it, move theta at an angle greater than 10 degrees, 30 degrees, 40 degrees. If I make a bob to move on this side, again going on the negative side, again coming back at mean position, that is one oscillation. Will that one oscillation will account for 1 second if I take more greater value for theta? No, understood. No, I understood. You will not. That is why these are called as linear SHM in order to get time period 1 second. Students, ये time period ये हमेशा ध्यान में रखना है. Blindly जब भी problems करो simple pendulum के लिए students blindly take one oscillation as 1 second. For one oscillation is 1 second. यहाँ पे 2 pi under root L by G is a formula which everybody has learned it. L क्या है? L क्या है? Sir, length of the pendulum. Length of the pendulum का मतलब क्या होगा? Can you tell me what is length of pendulum? This L stands for oscillating length or vibrating length. है ना? ये लेंथ क्या है? स्टूडेंट ध्यान से सुनना. लेंथ का मतलब कहाँ से लेना है मालूम है तुम्हें? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेना है स्टूडेंट्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब. हेलो स्टूडेंट्स, जब भी तुम L के बारे में देखोगे ना तो L है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब. ये हमेशा ध्यान में रखना. This I'm giving you right now because you'll be learning it more in SHM, in oscillation chapters. Lekin this is your effective length. Since whenever you speak about length of simple pendulum, it is called effective length. And what is effective length? Length of string plus the radius of the bob. क्योंकि ये है तुम्हारा center of gravity और ये तुम्हारा point of suspension. What does G stands for? Acceleration due to gravity. ये किसका है? Simple pendulum. Now suppose if I ask you, can you give me time period of oscillation of seconds pendulum? Then what will be your answer, students? If I ask you what is the time period of oscillation of seconds pendulum, you might get a multiple choice question on the seconds pendulum. This simple pendulum. Simple pendulum का time period is 1 second. Students, seconds pendulum का time is always 2 seconds. ये ध्यान में रखना students. यानी one full oscillation accounts for how much time? 2 seconds. Formula remains exactly the same. Yani students, simple pendulum will measure time equal to 1 second for one oscillation. Seconds pendulum for one oscillation will measure 2 seconds. The formula in both the cases T is equal to 2 pi under root L by G. L is called as the effective length of string plus radius of bob. क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? Is this clear? There are two kinds of pendulums. One is simple pendulum and one is second pendulum. The time period is equal to 2 seconds. Abhi suppose मैं mathematically, अगर मैं पूछूं students, what is the length of a seconds pendulum? चलो, if I want to solve it as an MCQ, what is the length of a second pendulum? तो क्या करोगे? Sir, आपने बोला time period 2 seconds है, तो डाल दो यहाँ पे 2 seconds. Students, put over here as 2 seconds. 2 and 2 will get cancelled. Are you listening? We are trying to do mental math. 2 and 2 will get cancelled. अभी यहाँ पे देखो, फिर क्या करोगे? रूट जी यहाँ पे आ जाएगा. Pi root L squaring both the sides.
So can I say G upon pi square is equal to L? What is G? 10. What is pi square? 10. Answer is 1. So अगर किसी ने पूछा what is the length of seconds pendulum? Nearly equal to 1 meter. Nearly equal to 1 meter. Taking G as 10 meter per second square and pi square is also 10. Students, जब भी तुम multiple choice questions करो ना, take pi square is 10. What is the value of pi? 3.14. उसको स्क्वायर करोगे ना स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट द कैलकुलेटर. अगर कैलकुलेटर होगा तो उसको स्क्वायर करना, you'll get it around 9.9 के आसपास, 9.98 के आसपास तुम्हें मिलेगा, यानी which is nearly equal to 10. Is this part clear with all of you? Students, up till now I haven't spoken anything about conical pendulum. मैं सिर्फ तुम्हारे बेसिक्स पे जा रहा हूँ जो a student of class 10th should know. This part you should know clearly, even this, and you all have learned it in lower standards. These words you all have come across. It's not that you all haven't come across these words at all in the lower standards. And maybe those students who have done units and measurements, they must have derived this mathematical relation also by the method of dimensional analysis. Is this much clear to all of you all? Arey, hi, na. What has happened? What is happening to this particular man? Yes, sir. You're not replying at all. Okay. और अभी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर तुम ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है ना स्टूडेंट्स, एक पेज मेंटेन करके रखना और वहां पे ऊपर सिर्फ हेडिंग में लिखना टाइम पीरियड. ओके, और ये फिजिक्स की बुक में किसी बुक में लिखना स्टूडेंट्स. और क्या करना मालूम है, अभी सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना, सेकेंड वाला सेकेंड पेंडुलम का लिखना, अभी थर्ड फॉर्मूला मैं ये दे रहा हूँ. एंड स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना, गो ऑन पुटिंग फॉर्मूलाज ऑफ टाइम पीरियड ओवर देयर. At the end of the year, you tell me how many formulas are there only on the time period. You'll go crazy. Students, you'll go crazy. कितने formulas in physics to know about time period. और जहाँ जहाँ पे time period आएगा वहाँ पे frequency आएगा. क्योंकि frequency है क्या? So simple, frequency is reciprocal of time period. This is in hertz. This is in seconds. Students, so now maintain this. तुम क्या करो, कहाँ पे, एक लास्ट पेज के ऊपर, और ध्यान रखना जब भी टाइम पीरियड का आया फॉर्मूला, किसी भी टीचर ने तुम्हें कहाँ पे भी डेरिवेशन दिया या फॉर्मूलाज दिया तो उसको सीधा वहां पे लिखना. तो सारे टाइम पीरियड के जितने भी अलग अलग चैप्टर्स के सारे वहां पे आ जाएंगे. एंड यू विल कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज, विल कम अक्रॉस as you move further up. Okay, so this is for simple pendulum, this is for seconds pendulum. Now we go for conical pendulum. What exactly is conical pendulum? What's the difference between a simple pendulum and a conical pendulum? In a simple pendulum, students, theta is very small. I get it. Now, what exactly Nishant was trying to say कि अगर मैंने थीटा को बढ़ा दिया, students, अगर मैं थीटा को बढ़ा देता हूँ तो students अभी देखो कैसे होगा. This is your point of suspension. Agreed. अगर मैंने थीटा को बढ़ा दिया तो students, now my pendulum will not oscillate along a straight path. अगर मैंने थीटा को थोड़ा सा बढ़ा दिया, then my pendulum will now perform almost circular motion, students. It won't perform linear, but it will perform circular motion. This is a bob. यानी अभी ये पेंडुलम, अगर मैं देखो ध्यान से सुनना, think as if the reading is a bob. ये है, मैंने क्या किया, I'm displacing it at an angle theta. I getting it, and then if I try to oscillate, will it oscillate linearly? No, it can go in a circular plane. तो ये क्या हो गया, ये conical pendulum हो गया. What is this called, students? It's a conical pendulum. What about it's tilted at an angle theta? See the path over here. The path is what? So the path is circular. ये हुआ उसका circular path. You're going in anti-clockwise direction. ये है center of the circular path. तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया radius. ये क्या बन गया सर, ये हो गया perpendicular height. ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया slant height. Length. What is the relation? Sir, L is equal to under root r square plus h square. Why not? Theorem of Pythagoras हो गया ना, ये 90 degrees हो गया. This is 90 degree, I'm getting it.
Then you have certain relations. What is sine theta? The sine theta is opposite upon hypotenuse. What is cos theta? The cos theta is adjacent upon hypotenuse. What is tan theta? So it's opposite upon adjacent. ये तीनों relations तुम्हें ध्यान में रखना है जब भी MCQs करते हो students. Agreed? What does this L stands for? Slant height. What does H stands for? Perpendicular height from the plane of revolution. Students, ये जो है ये तुम्हारा क्या है? इसको हम बोलते हैं plane of revolution of bob. Don't you think so that the bob is having a conical path? Yes. ये जो angle theta है इसको क्या नाम दे सकते हैं? Students, theta is called as, you might come across the word semi-vertical angle over here. Students, the word used for theta is semi-vertical. Yani I can give you an MCQ where I can say a bob is tilted at a semi-vertical angle of 23 degrees. So theta is 23 degrees. ये complete angle 2 theta होगा. ये semi-vertical angle, that is the angle formed by the string with the straight path we consider from its mean position. And then it is made to revolve. Is it revolving in a horizontal plane? Yes. Performing what kind of motion? Circular motion. अगर इसका मैंने time period constant रखा, then it is called time period of oscillation of conical pendulum. It gives you a concept. I want you to give me a mathematical relation for this. Hope the diagram is clear to all of you. क्या ये diagram clear हुआ students? A bob, Yes, sir. when displaced from its mean position at an angle theta called semi-vertical angle and made to revolve in a horizontal plane, then and keeping speed constant, motion is periodic, we need to derive the formula for time period of oscillation of a conical pendulum. Theta is called as a semi-vertical angle. H is the perpendicular height from the plane of revolution. R is the radius of the circular path of the bob, and L is a slant height. The formulas which you need to keep in mind for solving MCQs are theorem of Pythagoras, sine, cos, and tan. Now I want to find out time period. कोई बता सकते हैं how to go about with the time period? Anyone? Is anyone? Come on, Ashmita, tell me. Ashmita, are you there? Ashmita. Yes, sir. अगर सपोज अश्मिता मुझे बताओ, अगर बॉब को मैंने स्ट्रेट सस्पेंड किया विद द थ्रेड, ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. मुझे बताओ ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू दिस बॉब? फास्ट. So tension upwards and mg downwards. Absolutely correct. Tension is directed from the center of gravity to the point of suspension. T का मतलब टेंशन. टेंशन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ T dash, क्योंकि टाइम पीरियड इज T. I can have to same variable. mg को, see one thing, you must have learned force, laws of motion तुमने पढ़ा होगा. टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वहां पे तुमने कैपिटल T यूज किया होगा. लेकिन अभी मैं कैपिटल T किसके लिए यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड. इसलिए मेरा टेंशन T डैश में होगा, T कॉम्प्लीमेंट में होगा. कंफ्यूज मत होना. mg is directed vertically downward. Agreed? Now when the bob is displaced at an angle theta with the horizontal, with the vertical, it is displaced at angle theta with the vertical. Now can you tell me, when the bob is over here and the bob is performing circular motion in a horizontal plane, plane of revolution is horizontal, can you tell me what exactly the forces are acting when the bob is at an instant P? The bob is at point P. Ashmita, fast. So mg downwards and T Absolutely correct. Tension will be along the string. along length. Okay, along the length we consider directed from P to the point of suspension, P T dash होगा. Theta is तो with vertical. So हाँ, T cos theta. हो गया ना? देखा कितना इजी था. और ये मोशन सर्कुलर मोशन है ना? Yes, sir.
और सर्कुलर मोशन के लिए तुम्हें कौन सा फोर्स चाहिए? रियल फोर्स चाहिए, जीरो फोर्स चाहिए? रियल रियल फोर्स यानी कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपेटल कहाँ से कहाँ डायरेक्ट होगा? इनवर्ड्स From where? From the bob to the center of the circular path. तो ये फोर्स है, ये फोर्स लाने के लिए तुम किसको रिजॉल्व करोगे? तुम टेंशन को रिजॉल्व करोगे या mg को रिजॉल्व करोगे? टेंशन हाँ, टेंशन को रिजॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स mg को रिजॉल्व नहीं करोगे बिकॉज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम। दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि मैं mg को रिजॉल्व करूंगा, प्लीज फोर्स तुमने हेलो स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड लॉज ऑफ मोशन, यू शुड नो व्हाट टू रिजॉल्व। स्टूडेंट्स जहां पे इफेक्ट ऑफ जी इज नॉट कंसिडर्ड, यू विल नेवर रिजॉल्व। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर बॉब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव हो रहा है, स्टूडेंट्स बॉब यहाँ पे है, बॉब यहाँ पे है, बॉब यहाँ पे, बॉब यहाँ पे, बॉब यहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम होगा ना। mg इज कांस्टेंट बिकॉज इट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहाँ पे mg तो रिजॉल्व ही नहीं होगा तुम्हारा। कैसे होगा? अगर सपोज मैंने बॉब को बहुत बड़ा स्विंग दिया है, हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैंने बॉब को बड़ा स्विंग दिया है, स्विंग इज वेरी लार्ज, उसका मतलब, हेलो स्टूडेंट्स, उसका मतलब the bob is no more performing circular motion in horizontal plane. The bob is moving in circular path, but in which plane? Vertical plane. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉब मूव हो रहा है। अगर इसी बॉब को सपोज, ध्यान से सुनना, ये बॉब ऐसा था और ये हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, अगर ये बॉब को मैं वर्टिकल प्लेन में मूव करूं सीसॉ की तरह, ग्रेटर एंगल, तो तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा स्टूडेंट्स, वहां पे तुम mg को रिजॉल्व करोगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, horizontal plane of revolution. Everybody, please put down these things very clearly because many students commit mistakes while solving MCQs. They don't get it what to resolve. So I'm repeating it. For a body performing circular motion in a horizontal plane, for a body moving circular motion in a horizontal plane, suspended by a string or a chain or a tackle, then in that case, resolve tension. But if a body is said to move in a vertical plane, resolve mg. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Is it clear to all of you all? Yes, sir. So now I'm not going to resolve mg, I'm going to resolve tension. जैसे मैंने टेंशन को रिजॉल्व करूंगा तो सर हो गया ना, रिजल्ट तुम्हारा फॉर्मूला कितना इजी आ गया। अरे हाँ सर, ये थीटा हुआ तो ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा, z फॉर्म हो रहा है, so this is t dash. So can I resolve this? हाँ सर, ये हो जाएगा मेरा t dash cos थीटा और ये हो जाएगा मेरा t dash sin थीटा। t dash sin थीटा क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, वो भी डायरेक्ट अंदर हो रहा है, कहने से t dash, स्टूडेंट्स t dash stands for tension, t dash sin theta is equal to what? Force of centripetal. Now students, what formula should I write down for force centripetal? There are 3 formulas. Can anybody tell me what are the formulas for force centripetal, students? Can you tell me the formulas for force centripetal? Formulas for force centripetal, 3. Forgot. We did it by calculus method, the acceleration one, multiplied by mass. तो फोर्स सेंटीमीटर के कितने फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स? फोर्स सेंटीमीटर के तुम्हारे 3 फॉर्मूलाज है, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, m इंटू v इंटू ओमेगा, मास आएगा ना विद एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम? विल यूज mv स्क्वायर बाय r, विल यूज mr ओमेगा स्क्वायर और विल यूज m इंटू v इंटू ओमेगा। स्टूडेंट्स अगर तुम ये आंसर नहीं दे सकते हो या तुम्हें रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, टेक इट फ्रॉम मी, यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। By this time you should know these basics. Tell me which formula I'm going to put down over here. T sin theta is 4 centripetal. It has 3 relations. Which formula should I put down over here?
Yes, anybody? Nishan, tell me. Nishant, which formula should I go for? mv square upon r. Am I trying to find out velocity? Am I trying to find out tangential velocity of the bob? Am I trying to find out v? Did I ask you this as my question? Or am I trying to find out time period? Time period. So will v will give me a correct answer, or omega will give me a correct answer? Students, because omega is what? What is angular velocity? Is the motion UCM? Yes, the motion is UCM. The bob is moving at constant speed. Periodic motion है. तो omega को कैसे लिखोगे? Will you run omega as d theta by dt या 2 pi by t? भूल गए? I want the formula for time period, so I will not go for v. I will not go for v. I will go for m r omega square. Students, ये ध्यान में रखना. How to go about? Now, students, अगर यही question निशांत अगर मैंने पूछा होता ना, find the tangential velocity of the bob of a conical pendulum. Students, अभी ध्यान से सुनो, ये भी question है, ये भी MCQ है. They'll ask you a question on to conical pendulum and tell you to find out the tangential velocity, the velocity of the bob of a conical pendulum. तो v पूछोगे तो यहाँ पे तुम mv स्क्वायर बाय r लिखना. And students, उसका भी आंसर क्या होगा मालूम है? v is equal to under root rg tan theta. Students, conical pendulum में भी v का फॉर्मूला क्या मालूम है? v का फॉर्मूला क्या मालूम है? v is equal to under root rg tan theta. लेकिन थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल मेजर विद वर्टिकल. यानी कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यही फॉर्मूलास कितनी दफे हम लोग ने पढ़ा है सर? एक तो आपने बैंकिंग के लिए बोला था, कार फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था, और वहां पे थीटा वाज मेजर्ड विद द हॉरिजॉन्टल. फॉर्मूला यही था, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. दूसरा, मोटरसाइकिलिस्ट अपने आप को झुका देता है, जितना वो वर्टिकल से दूर जाता है उतना उसका स्पीड बढ़ता है, तो वहां पे थीटा वाज विद द वर्टिकल. बाइक के लिए ये है, कोनिकल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला फॉर tangential velocity or velocity of a bob in a conical pendulum under root rg tan theta. What is tan theta? R by h, opposite upon adjacent. मिलेगा ना? mv स्क्वायर बाहर लिखो. अभी देखो ये क्या है? What is theta cos theta? Theta cos theta क्या बैलेंस कर रहा है? It's balancing mg. Can I take the ratio? देखो आंसर आ गया ना तुम्हारा. अगर मैंने mv स्क्वायर बाय r लिया होता तो v is equal to what? rg आता. tan theta हो गया. लेकिन हमें ओमेगा चाहिए स्टूडेंट्स, so this will get cancelled. What is this? So this is sin theta upon cos theta into g by r is equal to omega square. So this is what now? And omega is what? Now can you solve and get the answer, students? Can you get an answer, students? What is sin theta? R by L. RR will get cancelled. So what's the formula for time period, students? Time period of a conical pendulum is 2 pi under root L cos theta by G. And that's your formula for conical pendulum. Students, the formula for conical pendulum is T is equal to 2 pi under root L cos theta by G. क्या ये formula clear हुआ? Where theta is the angle with the vertical. Students, is it clear? I repeat, मेरा formula क्या रहता? Sin theta upon cos theta into G by R. Students, it is G by R. फिर मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ sin theta को substitute किया. What is sin theta? R by L. R by L. RR will get cancelled. So I'll get G upon L cos theta. Students, G upon L cos theta is 2 pi by T. So T will be equal to what? Now students, you will say, sir, आपने U ऐसे क्यों लिखा? आप तो कर सकते थे ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा आप tan थीटा लिखते हो और tan थीटा को R by H लिखते हैं, तो G by H का फॉर्मूला आ जाता.
आपने ये फॉर्म में क्यों लिखा, रीजन क्या? Have a look at this equation, students, and have a look at this equation. Over here, what does L stands for? Length of the pendulum. This is also what? Length. Is that the effective length? Yes. This L is matlab what? Length of string plus radius of bob. What is this L is also? Length of string plus radius of bob. Why do I need to remember this? If theta is very small, students, if theta is very small, I get it. For linear SHM, take theta is very small. Let us assume theta to be 0 degree. What is cos of 0? 1. Am I getting this formula? स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया ये मैंने क्यों लिखा? यानी अब से अभी तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है, ऑटोमेटिकली याद होगा। यानी अगर कभी भी किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, फॉर्मूला विल बी व्हाट? T is equal to 2 pi under root L cos theta by G, because whenever they give you problems, they'll give you length of the string. They will give you theta, the angle at which the pendulum is making. If I take theta as 0, I'll get the formula for simple pendulum. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. So now see, you have got what formulas? Time period of simple pendulum T is equal to 2 pi under root L by G. ये लिखना, L का मतलब effective length delta C plus radius of bob. What is the formula for time period? Time period is just an entirely one oscillation के लिए 1 second. Second pendulum के लिए what is the time period? 2 seconds. What is the length of the bob? 1 meter. Third formula, what is the time period of oscillation of a conical pendulum? T is equal to 2 pi under root L cos theta by G. इसके साथ में तुम चाहो तो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म लिख के छोड़ देना। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, बिकॉज़ दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर प्लेन, rg tan थीटा, ये है वेलोसिटी एंड थीटा इज विद द वर्टिकल। स्टूडेंट्स, कैन आई erase this now? So 1 minute. Any query, any question, please do ask. Hope you are able to see the board clearly. Don't write on anything incorrect, students. They might ask you what is the frequency of a conical pendulum. तो इसी का reciprocal आ जाएगा 1 upon t. ये भी ध्यान में रखना. Frequency is always measured in hertz. Time period is in second. Yes, sir, done. Okay. For instance, now 2 more relations which I'm going to pick it up, and then we'll go for vertical circular motion. That will be your end of your chapter, students. ये जो दो formulas I'm trying to pick it up, students, these are from gravitation, but you might come across MCQs onto this because when you look at the module, students, of ours, तो वहाँ पे ये दोनों mathematical relations दिए हैं. I've given this particular mathematical relation, students. And this is actually with respect to resolution of forces, resolving forces, students. तुम force को resolve करोगे तो तुम्हें easily answer मिलेगा. यानी तुम्हारा vectors के ऊपर ही आता है, students. Now, the first question which I'm trying to put forward, this is actually, you'll be learning it in chapter gravitation also, students.
लेकिन why am I picking up this? Because it holds properties related to circular motion also, students. Now to understand, students, let us go for satellites. Whether artificial or natural, what does it perform? And your answer will be uniform circular motion. Where? Around the Earth. Right? So satellites perform uniform circular motion around the Earth. Artificial satellites are the natural satellites is the moon. Moon is a satellite of the Earth. What kind of motion does it perform? You see it. Likewise, do Earth revolve around Sun? Yes. What is motion? We consider periodic. Is it UCM? Yes, it's uniform circular motion. So what the path is elliptical, students? So what the path is elliptical? Earth is moving around the Sun in an elliptical path. But still its motion we consider periodic. Therefore, we say it's circular motion. We are trying to find out, students, हम यहाँ पे हम लोग क्या find out कर रहे हैं, students? We are trying to find out orbital velocity or critical velocity of a satellite performing UCM around the Earth. Students, exactly same चीज क्या होती है? यही चीज अगर मैं बोलूं, we are trying to go for orbital critical velocity. Same thing we can speak about. One more example I can give it to you. Electron, students. Do electron revolve around nucleus of an atom of an element? Yes. Electron also revolves around the nucleus of an atom of an element. What kind of motion does it perform? UCM. Is its motion periodic? Yes. Can I find out its orbital velocity? Why not? Students, हम orbital velocity ये electron का भी find out कर रहे हैं. Orbital velocity of electron or a planet or a satellite revolving. In this case, I'm taking satellite, लेकिन सबका answer almost same ही होगा. So हम क्या कर रहे हैं, students? We are trying to derive the formula for orbital velocity or critical velocity of a satellite performing uniform circular motion around the Earth. So let us go for this. Suppose if I happen to consider for the Earth. Agreed? Earth, we consider the path around the Earth for a satellite. The satellite always revolves around the Earth in an elliptical path. We consider motion is periodic. ये क्या है, students? ये है तुम्हारा radius of the Earth. ध्यान से सुनना, students. ये center of the Earth है. This is Earth. ये center है. ये capital R radius of the Earth है. Now, if I say the satellite is over here, students, okay, and the satellite is performing uniform circular motion. It's going in an anti-clockwise direction. ये है tangential velocity. At every instance, students, your V bar and R bar are mutually perpendicular to each other. Why not? Because it's performing what kind of motion? UCM. लेकिन ये जो distance है वो क्या है? ये radius of the earth है, students. अगर ये radius of the earth है तो ये क्या हुआ? What is this distance? So this distance is actually the perpendicular height from the earth's surface. Students, natural satellites, if I happen to consider, are moon, but when you go for artificial satellite, ये artificial satellite है, students. ये artificial satellite revolve कर रहा है, and these are always launched in geostationary orbit at a height of 35,900 kilometers from the surface of the Earth. Students, अभी जो भी तुम photographs देखते हो ना, okay, या NASA ने अपनी satellites डाल दी है, इंडिया की satellites भी हैं. Students, सोचो ये satellites कहाँ पे जाती है, कौन से orbit में जाती है? 35,900 kilometers above the Earth's surface. Radius of the Earth is 6,400 kilometers. तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का सेंटर वो डिस्टेंस क्या होगा? तुम बोलोगे सर r+h, जिसको मैं स्मॉल r लिखूंगा.
क्योंकि इट शुड बी बिटवीन द सेंटर। इसको मैं नियरली 36,000 लेता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं एमसीक्यू करता तो 36,000 प्लस 4,000 तो कितना होगा? 42,400। स्टूडेंट्स look at the value. Students, radius of the earth is simply 6,400 kilometers. The geostationary satellite from the center is at what height? Small r, 42,400 kilometers. It is a small value. It's a very huge value. Very huge value. ये है geostationary orbit. वहां पे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Now a person who is listening to me wisely and थोड़ा सा भी फिजिक्स में उसको इंटरेस्ट होगा तो तुरंत सोचेगा, सर उसका मतलब अब ये बोल रहे हो कि आपने इस ऑर्बिट को नाम दिया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इंडिया अपनी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, तो उसका मतलब सर यूएस भी वही करता होगा, रशिया भी वही करता होगा, ऑस्ट्रेलिया भी वही करता होगा, न्यूजीलैंड भी वही करता होगा। अरे हाँ यार, सारे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तभी जाके इसको दूसरा नाम दिया है पार्किंग ऑर्बिट्स। स्टूडेंट्स ये पार्किंग है, जैसे गाड़ियां कैसे पार्क होती है ना तुम्हारे बिल्डिंग में, तुम्हारे सोसाइटी में देखा है कैसे गाड़ियों को परफेक्टली अपने लेन में पार्क किया जाता है। वहां पे पूरे मार्किंग के साथ में, येलो मार्किंग के साथ में फ्लैट नंबर लिखा जाता है। किसी की गाड़ी किसी और के वहां पे पार्किंग नहीं होती तो झगड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी तुम्हें पार्किंग मिला हुआ है। हर एक नेशन को अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए पार्किंग रीजन दिया गया है, हमें उसी में ही पार्क करना है अपना। यानी सोचो, जब ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, लुक एट द फिजिसिस्ट, आवर फिजिसिस्ट, they are so smart, and these are all astrophysicists, so smart and so correct and so precision, so accuracy के साथ में उन लोग लॉन्च करते हैं उसी ऑर्बिट के अंदर। और उनकी जो रेसिड्यूज होती है, क्योंकि तुम लोग ने लॉस ऑफ मोशन पढ़ा है, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, मोशन ऑफ अ रॉकेट वर्टिकल अपवर्ड्स, उसमें मास भी तो डिटैच होता है ना स्टूडेंट्स? डीएम बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? अगर फ्यूल कंजम्पशन होता है तो कुछ फ्यूल बर्न होके एग्जॉस्ट बर्न होता है तो पूरा वेट ऑफ द रॉकेट कम हो जाता है, तो उसको और प्रपोर्शन मिलता है। तो जो और जो रेसिड्यू होता है, जो पार्ट, अगर जो रॉकेट खत्म हो जाता है वो डिटैच हो जाता है, तो डिटैच में कहाँ पे गिरता है? ओशन में गिरता है। ये सोचो अपने एस्ट्रोफिजिसिस्ट कितना कैलकुलेशंस करता है, और वो परफेक्ट कैलकुलेशन करते हुए वो लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे। तो कितनी सारी सैटेलाइट्स होंगी, यानी सोचो तुम्हारी सोसाइटी के अंदर कितनी सारी गाड़ियां पार्क हुई है अपने लेन में परफेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से, कि एक दूसरे के साथ कोलिजन भी नहीं हो रहा है। And this is what we consider geostationary. We are trying to find out this velocity, students. हम find out करते हैं ये velocity, जिसको मैं बोलूंगा orbital velocity. This is called as my orbital velocity. I want to get an answer for orbital velocity or critical velocity of a satellite performing uniform circular motion. Radius of the Earth is 6,400 kilometer. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear to all of you all? Students? Orbital velocity or critical velocity for a satellite performing uniform circular motion. Radius of the Earth is given to you as 6,400 kilometers. Yes, anybody can give me the answer for this? मुझे v की वैल्यू चाहिए. How do you go about it? The satellite is performing uniform circular motion. It's very easy. Anyone? And have you seen students India के अंदर भी क्या हो रहा है? India is now a nation which is considered to be one of the nation after, means जो NASA तो है ही है जो लेते हैं launch, लेकिन अभी under the governance of Modi, students, okay, our prime minister,
India have started launching satellites from our aerospace. हमारे जगह से दूसरे nations की भी satellites launch हो रही है. ये सोचो, he's making a good amount of business from there on. I don't know, recently there was a record from few of students from particular. I don't know how many satellites they had launched at one time. शायद 100 satellites launch किया हुआ था. I know about it. It was a huge number, good amount of number. और ये भी मैं बता दूं students, NASA ने recently, ध्यान से सुना students, NASA ने recently अपना 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 unit इंडिया में भी establish कर दिया है. And where exactly it is? NASA ने अपना यूनिट एक इंडिया में भी डाला है स्टेशन. Where exactly it is? It's in BITS, Hyderabad. Birla Institute of Technology and Science. Where? In Hyderabad. It has 3,000 acres of land around it. तो वहाँ पे NASA ने अपना installation कर दिया है. यानी सोचो, ये BITS के भी एग्जाम स्टूडेंट्स हैज टू गिव इट. जैसे तुम जेई मेंस देते हो, जेई एडवांस देते हो, तो BITS के अंदर BITS has 3 centers all over India and 1 abroad. BITS Pilani, BITS Hyderabad, BITS Goa and BITS Dubai. तो BITS हैदराबाद में ये लॉन्च किया हुआ है नासा ने अपना. ओके, मुझे बता सकते हो व्हाट्स द फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी? तो तुम बोलोगे सर इट्स सो इजी. डज अ सैटेलाइट परफॉर्म्स यूसीएम? यस. सो तुम क्या करोगे? फॉर a uniform circular motion, what exactly the satellite need? So the satellite needs a force which is directed from the satellite towards the center. What is that real force? Can I call that a centripetal force? This centripetal force is actually a real force. Who's providing the real force? Gravitational force. Gravitational force between Earth and satellite. है ना? So what exactly the gravitational force between the Earth and satellite? Which this should be known to students, and mostly NCERT students knows it. CBSE students knows this thing very clearly. They have learned it in gravitation, and a part of our SSC students also have learned it in gravitation. What's the formula for gravitational force? Gravitational constant. Capital M stands for mass of the Earth. Small m stands for mass of satellite. G capital M small m upon R square. ये किसका फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स सेंट्रीपिटल क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट. स्मॉल m स्टूडेंट्स इज मास ऑफ सैटेलाइट. ऑर्बिटल वेलोसिटी द होल स्क्वायर ऑफ द सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. स्टूडेंट्स, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? one is gravitational force, other one is centripetal force. Equating, ये रियल फोर्स है तुम्हारा ना. जब तुम इक्वेट करोगे तो कहने से मास ऑफ सैटेलाइट इज गेटिंग कैंसिल. हाँ सर. एक रेडियस कैंसिल हो गया. हाँ सर. आपको क्या चाहिए था? ऑर्बिटल वेलोसिटी. व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट परफॉर्मिंग UCM? So what's the formula? So it will be under root capital G capital M upon small r. Since what is small r is r plus h. What does capital G stands for? Capital G stands for universal gravitational constant. Its magnitude is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kilogram square inverse. What does capital M stands for? Mass of Earth. And since mass of Earth is 6 into 10 raised to 24 kilograms. Is this clear? Is it clear to all of you all? Yes, sir.
Okay, so the next relation what you have here is from gravitation itself, the acceleration due to gravity at a certain latitude. We need to go for g at a certain latitude. Lambda is latitude. Okay, we need to get a formula for this, and the formula is g lambda is equal to g minus r omega square cos square lambda. That's the formula, students. And for this, we are going to use concept of circular motion, students. Now, it seems that y'all are least bothered in order to understand all these things. So directly you can remember the formula, students. Forget about the derivation. You'll be learning it in the circular gravitation, students. मैं सिर्फ तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ. ये जो g lambda के हमारा gravitational acceleration a certain latitude दिया है, g practical purpose, r radius of the earth. I'll put the value of radius of the earth, students. It's 6,400 kilometers. Omega क्या दिया? Angular velocity of the earth, and that is 2 pi by t, students. So it's 7.26 into 10 to the power of minus 5 radian second per second. ये constant value है students. ये ध्यान रखना, ये constant value है. Omega of the earth 2 pi by t अगर तुम solve करोगे. Now what exactly latitude का मतलब क्या है students? When you look at the Earth's surface, students, the Earth is slightly geoid. Since Earth is slightly geoid. Just in short, I'm trying to tell you, students. ये if I happen to consider north, ये south, ये होगा west, और ये है ईस्ट. अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज में. ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ द अर्थ. नाउ अगर मैंने पूछा व्हाट एग्जैक्टली लैटिट्यूड मींस, if I try to take any place on the earth surface, let us say this is a particular place of the earth surface, then the line joining the center of the earth and the place, the line joining or the radius vector joining the place to the center of the earth when measured with the equatorial plane, it measures with the equator. It is called at a certain latitude or an imaginary plane If you look over here, this is an imaginary plane parallel to the equatorial plane. ये कौन सा plane है? Equatorial plane. It is called at a certain latitude. ये ध्यान रखना. यानी जब भी अर्थ रोटेट करता है, when earth performs rotational motion with constant omega, then point P performs uniform circular motion. ये ध्यान में रखना. तब जाके मैंने इसका सर्कुलर पार्ट दिखाया स्टूडेंट्स. अर्थ क्या क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन. तो ये जो जगह है या ऑब्जेक्ट है, व्हाट एग्जैक्टली इट्स परफॉर्मिंग, व्हाट काइंड ऑफ मोशन? इट्स परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मुझे क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन लैटिट्यूड. लैटिट्यूड का मतलब क्या? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज लैटिट्यूड, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ forming an angle with the equatorial plane. It is called a certain latitude. Yeah, any plane parallel to the equatorial plane is at a certain latitude. अगर मैं ये जगह को देखता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसी का अगर मैं फोर्सेस के हिसाब से देखो, इफ आई ट्राई टू मैग्नीफाई, तो ये मेरे फोर्सेस आ जाएंगे. ये पॉइंट पी है. दिस इज अ सर्कुलर पाथ. दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये होगा mass of the body into gravitational acceleration. Agreed? I'll consider this case. Now, when I speak about it, there is one force which is directed from the particle towards the center. ये तुम्हारा force of centripetal होगा, which is equal in magnitude and opposite direction to force of centrifugal. ये तुम्हारा normal reaction force होगा. अगर ये angle तुम्हारा lambda है, तो ये भी lambda होगा. Vertically opposite ये भी lambda होगा. So now I'll try to resolve this force centrifugal into 2. जब भी तुम इसका रेजोल्यूशन करोगे ना स्टूडेंट्स, इसको तुम रिजॉल्व करोगे ना, तभी तुम्हें ये आंसर मिलेगा. फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे.
यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ना कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर दे आर हैविंग टू फोर्सेस स्टूडेंट्स, दे आर हैविंग टू फोर्सेस, एक इस तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग फोर्स होगा, दैट इज एक्चुअली अकाउंटेबल फॉर दिस रिलेशन. So when somebody asks you students what's the formula for acceleration of gravity at a certain latitude, तुम्हारा आंसर क्या होगा? G lambda is equal to G minus R omega square cos square lambda. Agreed? This is what the formula is. Means I can give you a different latitude. Now suppose if I say what exactly G at poles will be. अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को पोल पे ले लिया तो लैम्बडा क्या बन गया? पाई बाई 2. तो put this as 90. Okay, put this as 90. Cos of 90 will be 0. What exactly G at poles is simply G, because cos of 90 will be 0. अगर मैंने इक्वेटर पे ले लिया इसको, what is G at equator? तो लैम्बडा क्या बन जाएगा? 0 डिग्री. What is cos of 0? 1. What is G at equator? G minus R omega square. Now when you see over here, what is small g? Is G at poles. So instead of G, can I run this as G at poles? Students, मैंने क्या किया है? ये G को मैंने G at pole सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे. और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो अभी देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया? तो G at poles minus G at equator is equal to radius of the earth into angular velocity का square of the earth. अरे हाँ सर, हम लोग ने स्कूल लेवल में पढ़ा था कि acceleration due to gravity at poles is greater than gravitational acceleration at equator. Students, you all have learned this. What is the reason behind it? You already have learned it that the equatorial radius is greater than the polar radius. So G at poles is greater than G at equator. Now if somebody asks you by how much? By how much G at poles is greater than G at equator? So what's your answer? R omega square. What does R stands for? Radius of the earth. What exactly omega? Angular velocity. This is what the concept regarding acceleration to gravity at a certain latitude. So all those, if I consider for the earth performing rotational motion in anti-clockwise direction, students, all those places on the earth surface are going to perform uniform circular motion. I have selected any one place on the earth surface. We try to resolve forces over here. We can get this mathematical relation, students. And thus we can see that G at poles is greater than G at equator. अभी यहाँ पे circular motion का क्या concept आया? ये part आया, centripetal आया, centrifugal आया. इसको मैंने resolve किया. एक इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. मुझे ये वाला, इसका resolution इस तरफ लेना है, जो इसके साथ में balance होगा. It is still bound, so this force is greater than this. So mg minus something will be equal to r omega square. Consider. Can I erase this now? So 1 minute. Yeah. Yes, sir. Done. So the right diagram which is there, Hmm.
The dotted lines is centrifugal force, no? Yeah, centrifugal force. Because see, when the Earth is set to rotate, okay, the body on the Earth's surface, it needs a centripetal force, and at the same time there'll be centrifugal force also acting. If I try to increase the speed of revolution, the body will be thrown out Yes, okay. because of the force of centrifugal. A simple example of a merry-go-round. अगर तुम मेरी गो राउंड को यानी अश्मिता ये सोचो कि अर्थ एक मेरी गो राउंड है और तुम अर्थ के ऊपर हो. Ashmita, what is the speed of Earth? Yes. 10 raised to minus 5. Is it very large or very small? 7.26 into 10 raised to minus 5. यानी तुम्हारा आंसर 0.0000007. Is it a very large value or very small value? Very small. तभी जाके अश्मिता, do you feel कि you are rotating? No. तुम्हें फील हो रहा है कि अर्थ रोटेट हो रहा है? No. नहीं ना, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत कम है इसलिए है. लेकिन all of them means we all are performing circular motion. And what is our speed also around the same axis? Exactly same. यही है. लेकिन अश्मिता, अगर बाई चांस कुछ चेंजेस आता है सराउंडिंग्स में, एंड ऑल ऑफ अ सडन अर्थ घूमना शुरू करता है स्पीड में, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंड सपोज यू आर ऑन द अर्थ सरफेस. So in what frame of reference you will be? Then you'll say, sir, I'm in a non-inertial frame of reference. So now if you have certain people who are staying at equator. There are certain people who are staying at a certain latitude. There are certain people who are staying at poles. And if the earth starts moving with a velocity very large, how much? If the angular velocity is greater than 17 times the present value, अगर by chance मैंने इसकी स्पीड 17 गुना कर दी, तो what is going to happen? सर तभी ये centrifugal force act होना शुरू हो जाएगा, because we are on in a non-inertial frame of reference. So what is going to happen? The objects will simply fly off. But will the objects at the poles will fly off? No, because they are on the axis, they are at rest. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे देखो तो कौन सा ऑब्जेक्ट विल बी फ्लाइंग ऑफ मोर इजीली? सर इक्वेटर पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, सर इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसकी लीनियर स्पीड भी ज्यादा होगी, तो इक्वेटर पे इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. एक सिंपल एग्जांपल, इसको मेरी गो राउंड को पकड़ो कि अगर मेरी गो राउंड बहुत स्लोली जा रहा है तो तुम्हें फील नहीं हो रहा है, लेकिन उसी मेरी गो राउंड पे तुम खड़े हो और उसी मेरी गो राउंड के ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको फास्ट घुमाना शुरू कर दिया, you will be thrown radially outwards. So the formula for acceleration of gravity at a certain latitude is g minus r omega square cos square lambda. Lambda is the latitude. And from here we come to the conclusion, students, weight of a person changes from place to place on the earth's surface. ये शायद तुम लोग ने पढ़ा होगा. At equator it is different, at poles it is different, now at latitude also it will be different. अगर सपोज कोई पूछता है तुम्हारा वेट पोल्स पे कितना होगा, so weight at poles will be greater, resistance is less. Whereas the weight at equator will be less because g at poles is greater than g at equator, and weight is m into g. Is this clear, students? Yes. I should do like that. Last half an hour I should stop the recording.